ऑटिज्म की जो एक्चुअल पिक्चर है, इट्स नॉट एज इजी एज यू जस्ट रीड इट ऑन गूगल एंड से कि ये इसको ऑटिज्म है। कोई आते ही रो रहे आते ही एंटर हुए कि जी व्हाट्स द इशू, कंसल्टेशन के लिए जब आए, जी वी नो वी आर चाइल्ड हैज ऑटिज्म। ओके, अब इस असेसमेंट रिपोर्ट हु टोल्ड यू, ये जी गूगल पढ़ लिया था। हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट और ऑटिज्म केयर सेंटर की डायरेक्टर मलीहा लतीफ़ से अबाउट सम मिस इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और कैसे इस कंडीशन को हमारी सोसाइटी में डीस्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत है। फादर्स की जहाँ सपोर्ट है, मदर्स को बच्चों की थेरेपी में बहुत चेंज आता है। जहाँ फादर सपोर्टिव नहीं हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं मदर्स को, या सपोर्ट नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे, बस एक थेरेपी के पैसे दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यार तुम थेरेपी पे तो लेके जा रही हो, फ़र्क तो कोई पड़ नहीं रहा। 90% ऑफ टाइम आई सीन मदर्स हैव अ लॉट ऑफ गिल्ट कि मैंने कुछ किया था, मैं स्ट्रेस में थी, मेरी नेग्लिजेंस से, हाँ मैं प्रेगनेंसी में खाती नहीं थी। This is the first half of our conversation. Welcome to another episode of Out of the Box. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Out of the Box. इस वीक के एपिसोड में हमारी जो गेस्ट हैं, she is a clinical psychologist. She is also the director at Impact and Autism Care Centre. Basically, Impact का काम है उन बच्चों और एडल्ट्स की मदद करना जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, ADHD, स्पीच और लैंग्वेज इश्यूज़, और उसके साथ साथ ऑटिज़म केयर सेंटर का काम है। इट्स अ सेंटर इन लाहौर जो कमिटेड है फैसिलिटेट करना और प्रिपेयर करना ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को आगे की ज़िंदगी के लिए। सो वी हैव विद अस टुडे मलीहा लतीफ़। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेसिफिकली इस एपिसोड में अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ डिस्टॉर्शन सुनाई दे रही है, इट्स बिकॉज ऑफ the rain. We're so glad that our guests were able to join us in this weather, so please bear with us because it's a very crucial conversation that needs to be carried out right now. हम शुरू करते हैं basics से and so you can tell everyone and एक तरह की sort of awareness inculcate होगी in the process कि what autism really is. Thank you, Sarosh. Autism basically is a neurodevelopmental disorder which has recently become very common in Pakistan as well. बाहर तो है, हमेशा से था, बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस सडनली एकदम आना शुरू हुई है कि क्या चीज़ है। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक ऑफ ASD ऑटिज्म, इट हैज़ 3 बेसिक जिसकी सिम्टम्स हैं कि देयर इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, एंड देन देयर इज लैक ऑफ कनेक्शन with the people around you, with the parents, with everyone. सेकेंडली इसमें जो बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है वो ये आ रहा है कि सोशल स्किल्स के साथ बच्चों की आई कांटेक्ट की डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपकी स्टीरियोटिपिक एक रेपर्टोरी बहुत ज़्यादा है। सो स्टीरियोटिपिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी, दैट्स वेरी कॉमन. So when we call stereotypic pattern of behavior, it means there's a fixation or rigidity around certain behavior. It can be, carrying a toy to anywhere that you want to go, sleeping over a specific pillow. They just want to hold on to some string for the entire day. Similarly, communication. When it comes to communication, it includes speech. There's usually there's most of the cases there's no speech at all, or if there's some speech, there are very few words that they can speak. Besides this lack of understanding what the parent or somebody is saying. So lack of understanding है कि कोई क्या कह रहा है, कि अगर आप ये भी कहते कि okay, give me a glass of water or just put this ball on the table, they do not understand what it is. So this is one part is understanding, the other is to talk. कि पानी चाहिए, खाना दे दो, मामा आ जाओ, so ये चीज़ें नहीं हैं. And then when they go to some social situation, to a park or to a wedding, there's a disaster most of the times. So social interaction का problem आता है. In a layman's term, what we call it, they have a bubble of their own. They have their own world. And they just want to live and stay in their own bubble, where there is no interaction, no communication, no eye contact, and no input from the outside world for them.
So, and then when it comes to stereotypic behaviors, they want to, play, have certain motions. They prefer to play with the tires or wheels of a car. They like circular motions. They want to spin around the table, or they just want to spin around. They want to line up objects. So there are certain fixated behaviors that they want to repeat constantly. बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी के साथ-साथ अगर आप बताएँ कि अगर आप हमें बताएँ इम्पैक्ट फॉर किड्स और ऑटिज़्म केयर सेंटर का रोल, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आप लोगों का एजेंडा क्या है? कौन से गोल्स के साथ आप कमिटेड हैं? व्हाट डू यू सीक फ्रॉम दिस स्पेस? I think it's very interesting because um, I am working in this field for the past 29 years. So when I like started my career and profession, there were like assessments, and we're doing working with anxiety, stress, depression, speech delays. But approximately few years back, in fact, like you can say 9 years back, we were working, we were taking one-on-one sessions for autism or anybody. But then there was a flood of children having autism, and parents insisted us to have a full day activity for these children, and that was the need. Ideally, the models that are being followed in USA, Canada, Europe, they do have a plan for the entire day. So what happens, and that's when we develop from the Autism Care Center is a sister concern of Impact. What we want to do there, we want to engage children in a holistic approach, where because in autism they have speech delay, there are a lot of behavioral issues, behavior repertoires, and then there are a lot of sensory issues, which we call sensory overload. Sensory overload can be anything to do with our five senses. एक्स्ट्रा लाइट हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकती है, ब्लो ड्राई की साउंड आप ट्रिगर करेंगे, प्रेशर कुकर नहीं चला सकते घर में. सो गाड़ी की स्क्वीक साउंड्स अगर आ रही हैं, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई व्हाट द इशू इज. सो होता ये कि उसके अंदर देन फाइंड आउट करना कि क्या, तो चलते कि बहुत पीछे किसी घर में पानी की मोटर चल रही है, उसकी कोई साउंड आ रही है जिससे बच्चा ट्रिगर कर रहा है, चीखें मार रहा है. सो इस टाइप के इश्यूज हैं जो कि इन अ 4 आवर प्रोग्राम वी वांट टू एड्रेस टू दोज इश्यूज, जहाँ सेंसरी, स्पीच, बिहेवियर सब कुछ कलेक्टिवली हम बच्चों को करवाएं थेरेपी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स. Aim is to mainstream these children into regular schools. Pakistan में there are no mainstream schools as such. कुछ schools ने अब recently start किया है जहाँ regular students and especially the autism के kids they're studying together. But we do train them, we do provide them therapy so that they are ready for a mainstream school where they have to follow a certain regular schedule of the day. 30-35 minutes Urdu की class, English की class, break time, lunch time, socialization. So हम उनको train कर रहे हैं, 1-to-1 पहले उनकी therapy हो रही है, अकेला बच्चा है therapist, and then we want to we mix them up together in smaller group, 3 से 4 बच्चे together. Gradually we build it up, and so that they are able to take in a lot of input from the outside environment. So some of them are high functioning children. High functioning जो हैं, they're cognitively they're brighter kids, जिनका IQ अच्छा होता है. So they pick up on academics as well, and books में उनको Asperger's syndrome कहा जाता है. Now this term is being obsoleted. इसका अब umbrella आ गया है ASD, autism spectrum disorder. So it's a spectrum now, but high functioning are those जो के Asperger's की category में आते हैं, and they're the ones who can go to school as well. But then there are those जिनका prognosis is not very good, and then there isn't much hope for school, but कुछ तो करना है, उनको छोड़ना तो नहीं. So they should be streamlined. अगर parents want to go to a birthday party या ईद आ जाती है या शादी पे जाना है, so they should be taken along. बिल्कुल. So इतना तो बच्चा settled हो के वो वहाँ जाके haywire ना हो जाए. So I think I can take advantage of working for so many years, and I would like to share.
I first saw an autistic child in 1997 in Pakistan, and that was honestly speaking an alien to us. समझ नहीं आ रही थी कि ये तो बुक्स में नाम पढ़ा था, ये तो होते भी हैं, रियल में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. So at that time it was I think for someone like me, I was really charged and motivated कि कुछ तो करना है, पढ़ना है. उस ज़माने में गूगल नहीं था, बुक्स आ रही हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई अमेरिका से विजिटर आया, उनको पकड़ लिया था, स्पीच थेरेपिस्ट होती थी कराची में अवेयरनेस इज बेटर देन लाहौर. बहुत लोग आते थे और उनसे फिर हमने ट्रेनिंग्स ली, बैठे, बहुत एफर्ट की. और आई थिंक वो एक एक दिन बच्चे का हमने रिकॉर्ड किया, देखा कि हाउ इट वर्क्स. So over all these years, that was a 5 years old boy in 1997. I think he's 25 plus now. We're still in touch with him. He's at home, settled, much better. He does riding, but most of the time he stays at home and is living an independent life, but with his parents. So this is how things evolved over the years. Worked very hard with them. आज के दिन अगर मैं कहूँ तो बहुत easy है. Easy in the sense कि बहुत research है. You are 1 minute away from USA and UK and professionals के साथ, researchers के साथ. You have different groups जहाँ पे interactions हो रही हैं. So that's a very good thing. और treatments बड़ी improve कर रही हैं. And awareness, yes, I would say there's still dearth of awareness in Pakistan. Dearth of awareness is one thing, and there's denial as well. बहुत denial है among parents, specifically among fathers and grandparents of both the families. बिल्कुल. लड़की लड़के दोनों के नहीं, टिपिकल जो बोला जाता है, बड़ा होगा खुद बोल लेगा. Speech delay is a very prominent feature. Speech delay is a very prominent feature. So it's just taken कि बड़ा होगा तो बोल लेगा, तुम भी छोटे होते नहीं बोलते थे. So वो होता ही है कि उसमें टाइम गुजर जाता है, because brain development का by 5 years of 5th year of age, brain development, सारी body की development is very fast, rapid. So उसमें जितनी therapeutic input चला जाएगा ना, the child will pick it up. And speech बड़ी बेहतर. So early intervention की बात है सारी, जितनी early age पे दे दोगे चीज़ें सेटल हो जाती हैं. आपने वो 97 वाली स्टोरी शेयर की, और डिड यू सी दैट एज अ चैलेंज और लाइक अ मोटिवेशन फॉर योरसेल्फ? बिकॉज अगर मैं पर्सनल लेवल पे या कम्युनल लेवल दोनों पे अगर आप देखें तो काफ़ी चैलेंजेस इनकाउंटर आप अभी भी करती हैं टू दिस डे, लाइक यू हैव शेयर्ड योरसेल्फ. तो हाउ डू you have the motivation to just not stop with your mission? I think it's a very good question. I ask myself as well, because it's really the burnout is very high in this field, and to keep yourself motivated and going, I think it's just in here. You cannot work with special needs unless and until you have the passion to work with them. It's completely out of your passion. Yes, 97 में was a big motivation कि ये है क्या, we were also young and wanted to learn. In 20s में वो करना है क्या, तो वो एक कहते हैं ना, कीड़ा था, करना है तो करना है. So learning हुई, बच्चे पे अप्लाई किया, रिजल्ट्स मिले, पेरेंट्स, फैमिलीज वर हैप्पी, वी वर, आई थिंक मोर देन द फैमिली, वी वर हैप्पी कि ये तो हो गया. सो फिर और अवेयरनेस आई और आता गया. तब से अब तक अगर मैं देखूं तो आई थिंक थिंग्स हैव शिफ्टेड अ लॉट. तब के चैलेंजेस अब के डिफरेंट हैं. आज पेरेंट्स आते हैं, दे हैव सम नॉलेज. एक तो आई वुड लाइक टू यूज द प्लेटफॉर्म टू टेल ऑल माई पेरेंट्स एंड टेल all other parents as well, please stop your research at Google. Google में there is every sort of article that's there. वो आते हैं, मिसकंसेप्शन है, कोई आते ही रो रहे, आते ही एंटर हुए कि जी व्हाट्स द इशू, कंसल्टेशन के लिए जब आए, जी वी नो वी आवर चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म, ओके, अब इस असेसमेंट रिपोर्ट हु टोल्ड यू, ये जी गूगल पढ़ लिया था. गूगल के बहुत बेनिफिट्स भी हैं, बहुत फ़ायदे भी हैं, बट ये कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर राइट डायरेक्शन में नहीं है फिर मिसलीड पेरेंट्स, डिप्रेशन आ जाता है. Parents, they feel very low, and the parent is feeling low and depressed. They cannot help the child.
सो ऑटिज्म की जो एक्चुअल पिक्चर है इट्स नॉट एज इजी एज यू जस्ट रीड इट ऑन गूगल एंड से कि ये इसको ऑटिज्म है. It's generally mixed up with speech delay, which is a very simple common thing. Speech delay होता है, common है. With therapy, speech comes in and you just move on with life. But with a child who is having autism and a speech delay with autism, yeah, with तो नहीं, I mean it's part of autism, but अगर साथ में associated autistic features हैं, then that's I think that's a tedious thing to do because behavioral issues बहुत हैं, fixations हैं, repetitive behaviors बहुत हैं, then ये sensory issues जिनमें आपकी eating की बहुत issues हैं, you cannot chew a solid food, crunchy food चाहिए किसी को, liquids चाहिए, biscuit सिर्फ soak करके खाना है. Sleep issues are very common. Sleep issues are very very common. Parents they just stay up the entire night. So इस टाइप की triggers हैं environment से जो कि आ जाते हैं. Then transition shift, traveling is मुश्किल for them because shifting from one place to another is creates a hell for families. कुछ वेरी फ्यू बट कुछ बच्चों में तो फैमिलीज में तो कि कमरे की बेडशीट भी चेंज हो गई है, सो टैंट्रम्स आएंगे, मेल्ट डाउन्स आते हैं. सो ये स्पीच डिले इट्स नॉट जस्ट स्पीच डिले, एसोसिएटेड ऑटिस्टिक फीचर्स हैं विच कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन. आई थिंक वॉट वी कैन गेट टेक अवे फ्रॉम दिस इज के जो सेल्फ डायग्नोसिस है इसको प्रीच नहीं करना. आई डोंट नो इफ पीपल हैव नोटिस बट आप बेशक किसी भी लिंक की तरफ आपको आपके गूगल रिजल्ट्स ले जाए, दे ऑलवेज मेंशन दैट यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंसिडर करें इस चीज़ को कि इंस्टेड ऑफ आप अपना खुद डायग्नोसिस वगैरह करें, इट्स बेटर कि प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल, दे रेडिली अवेलेबल बिफोर यू मेक अप योर माइंड. Exactly. Professionals are available. इसमें I think I come across every sort of parent. One who comes with their own diagnosis, and the others who are completely in a complete state of denial. And no matter what, even if they have a report from here or abroad, they would say कि कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, ऑटिज्म तो नहीं है, ऑटिज्म तो नहीं है, तो ऐसे ही नहीं बोलता, इसकी मदर भी ऐसी थी, फादर भी ऐसे थे, इसको तो ADHD हो गया है. दे वांट कम टू क्या से कहते हैं, एक कंसेशन हो रही है जहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ऑन द डायग्नोसिस. Let's not call it autism. ADHD, because ADHD is something which is very easily acceptable now. Because जब हम when I started my work, उस time ADHD was also a difficult thing. It is difficult, but अब तो बहुत it's very common. Manageable, easily manageable. Autism is also manageable, but if you follow the right path, early intervention, working on all the areas, behavior, speech, and sensory issues, and then following a routine for the day. If they are with us at Impact and for certain hours, then the parents they also need to have a certain routine at home, which they need to follow regularly. If there's no routine at home, तो therapy भी जो हो रही है ना उसका भी effect फिर lower हो जाता है. So it's something where parents, especially mothers, need to be on guard 24/7. I think that's where I also feel for them. It's not an easy situation. It's a lot of stress on parents to follow a routine. One, number two, to accept the fact what it is. बिल्कुल. इवन कल्चरली स्पीकिंग हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, दे व्यू अ चाइल्ड विद ऑटिज्म एज अ फेलियर या बैड लक. अपने पार्ट पे वो फील करते हैं. तो आप लोग किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं देयर वे ऑफ थिंकिंग, और आप लोग किस तरह नेविगेट करते हैं अराउंड दोज फैमिलीज और पेरेंट्स जिनके कुछ डेज और कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जो उनके लिए एक्स्ट्रा चैलेंजिंग होता है? हाउ डू यू परफॉर्म दैट? See, my personal approach is to be very fair and honest. I don't sugarcoat anything. Some people may not like me
for this reason, but I think किसी का इसके पीछे किसी दो का भी भला हो जाए तो हो जाए. Autism is something, if it's there, जाता नहीं है कहीं, because जेनेटिकली एक वो न्यूरोलॉजिकली फॉर्म हो गई ना, वायरिंग हो गई. वायरिंग में थोड़ा सा इधर उधर को जो भी वायर इधर उधर लग गई, उसकी वजह से वट एवर इज हैपनिंग, स्पीच नहीं है, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, ऑटिज्म आ गया है, तो वो है. बट येस, द होप इज कि इट्स मैनेजेबल. हमें वर्क करना है इसके ऊपर, हमें इसको लेके चलना है. सो व्हाट आई टेल माय पेरेंट्स एंड फैमिलीज दैट a family who has a child with autism, they need to work as a unit. If the parents living independently or living in a joint family setup, they need to work as a unit to to put this child on the right track. होता क्या है कि मदर्स कहती हैं, मदर्स में most of the times 90% of the time I've seen mothers have a lot of guilt कि मैंने कुछ किया था, मैं स्ट्रेस में थी, मेरी नेग्लिजेंस से, हाँ मैं प्रेगनेंसी में खाती नहीं थी, उस वजह से. इस वजह से ऑटिज्म नहीं होता, ये सब कुछ तो पहले भी होता था. सो ऑटिज्म हो गया फॉर वट एवर रीज़न हो गया और आ गया. सो एक तो गिल्ट रिमूव करना, मुझे को लगता है कि दैट्स माई ड्यूटी, कि उनको एक उस गिल्ट से निकाला, बिकॉज एक मदर हु इज फीलिंग गिल्टी वोंट बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बड़ा इजीली आ जाता है. So it's difficult, but then you're chosen by God. एक है चीज़ आ गई है, फेस करना है ना. सो आप उसको लेके चलना है. यू नीड सपोर्ट डेफिनेटली. हस्बैंड की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डाइवोर्स रेट का जो एक हाई होने का रीज़न है, या ये कह लो कि स्पेशल नीड्स में when a child is being diagnosed with any sort of special need, लेबल कह लो या ऑटिज्म है, कोई भी हो जाए, fathers से just divorce mothers and they don't look after them at financially or in any way. ठीक, तो वो बड़ा ऐड हो जाता है बर्डन लिविंग अलोन. Then it's not just taking care of a child with autism. इसमें बहुत कुछ है ना, उनकी नीड्स हैं, उनके फाइनेंशियल नीड्स हैं, थेरेपीज़ हैं. थेरेपीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, so not everybody can afford it. And unfortunately हमारे यहाँ अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें नहीं हैं. पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर उस तरह से नहीं है. चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें दे डू हैव दी सर्विसेज, बट जो बच्चे हैं उनको once a week या twice a week टाइम मिलेगा for half an hour. जबकि रिसर्च सेज, across the globe research says 30 to 40 hours of therapy per week is the solution, is a remedy. So अगर जो मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं 20 hours तो हम कर लेते हैं in a week, ठीक है. So 20 hours के बाद then we train our parents, by the way. We are very open, we call them and जब आना है आएँ, बताएं. We set up a time, आएँ, ट्रेनिंग लें, ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन करनी है, खुद आप सेशन करो, we'll guide you. So I'm very open that way. Alhamdulillah, my entire team is amazing, very good, very dedicated, professionally excellent. So हम उनको पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं so that वो 30 to 40 hours of therapy हो सके पॉसिबल. हम तो बहुत एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं ना, पर घर में अगर if they take a child to a park for 45 minutes or an hour, that's also part of therapy. But वो टाइम फिर होना चाहिए. 5 to 6 every day is a part time. Summers में it's swimming time, it's a nap time, TV भी दो, snack time है, family time है, you all sit together, play time भी दो, easy free भी छोड़ दो. So that routine is therapeutic, in fact. So I think and it does show results. But families में जहाँ fathers की मैंने देखा personally, besides research, ये research में भी चीज़ें, लेकिन मैं तो बहुत बातें आज अपने experience से भी करूँगी. और मुझे क्योंकि ये this is what I'm seeing in Pakistan 29 years से ये देखते this is something I really want to convey, कि फादर्स की जहाँ सपोर्ट है मदर्स को, बच्चों की थेरेपी में बहुत चेंज आता है.
जहाँ फादर सपोर्टिव नहीं हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं मदर्स को, या सपोर्ट नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे, बस एक थेरेपी के पैसे दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यार तुम थेरेपी पे तो लेके जा रही हो, फ़र्क तो कोई पड़ नहीं रहा. सो नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच टाइम द चाइल्ड विल टेक, इट्स अ सीरियस कंडीशन. इस टाइप की चीज़ें, क्रिटिसिज्म एक मदर्स को प्रेशर में रखेंगी तो वो स्ट्रेस आएगा. जहाँ फादर्स खुद बड़े सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, बच्चे की नीड्स को समझ रहे हैं, बच्चे में चेंज बहुत आता है, बिकॉज द एनवायरनमेंट बिकम्स वेरी परमिसिव. सो वो एक पॉजिटिविटी आती है, एक्सेप्टेंस आती है. और आई थिंक एज पेरेंट्स ये होता है कि रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ नॉट व्हाट द चाइल्ड सीक्स, राइट. उसको आपकी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको आपकी प्रेजेंस चाहिए, उसका ही एक इफेक्ट पड़ता है. दैट योर फादर इज राइट देयर विद यू, मतलब इट्स नॉट जस्ट द मदर, योर पेरेंट्स आर देयर विद यू, so you can feel safe because that's very natural. That's very natural because parents बताते हैं child who doesn't have speech or single word at all, but the moment in the evening father comes home, एक हॉर्न होता है, कहते हैं कहीं बैठा हो, ये उठ के भाग जाता है गेट पे, तो बाप को चिपक जाएगा, या वो एक गाड़ी का राउंड लेना होता है, नहीं भी लेना तो बाप कुछ लेके आया है, एक हग भी कर लिया, यू नो, एक बॉन्डिंग है. So that, you know, a happy child, a good positive healthy bond produces good results. Nurturance है ना, so nurturance is equally important for any child. Autism है या नहीं है, वो need सबकी है, that's a human need. So yes, mothers also feel very supported ना and secure. So अगर जैसे हमारे उसमें बिहेवियर थेरेपी में आता है कि ये सर्टन चीज़ें, ये टॉय है, फिक्सेटेड है, इफ अ चाइल्ड इज फिक्सेटेड विद अ सर्टन कार, कि अब इस टाइम के बाद आपने इसको छुपा लेना है, नहीं देना, छुपा ली, बट वो नीचे जाएंगे, दादा दादी या माँ गई अपने, तो नाना नानी, एनी ऑफ दीज फोर कैरेक्टर्स कहेंगे नहीं तुम तो ज़ाया तंग कर रही हो बच्चे को, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, बच्चे को रुला क्यों रहे हो, क्यों रुला रहे हो, टैंट्रम में मेल्ट डाउन रोएगा तो सही. बट देन दैट्स व्हाट बिहेवियर थेरेपी इज, कि आपने नहीं देना, वंस यू से नो देन जस्ट स्टिक टू इट. आप ना करते हो, माँ ना कर रही है, दादी कैंडी दे देती है जाके, सो वो सब थेरेपी जीरो हो गई ना. सो दिस इज हाउ द सपोर्ट कम्स इन. आपने सपोर्ट की बात की, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग इन बच्चों के लिए सेफ स्पेस कैसे क्यूरेट करते हैं, हाउ डू दे एंड अप ट्रस्टिंग यू विद देयर वल्नरेबिलिटीज, क्योंकि वो एक एट एन ऑल टाइम हाई पे होती हैं, क्योंकि कोई प्रोफेशनल टूल्स, कोई ऐसे इमोशनल टूल्स जो ज़रूरी हैं कि आप एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड कर सकें एट द सेंटर. We call it rapport building. Yeah. So that's just a bond. That's how we start therapy, in fact. So without this bond, we cannot have it. So therapist and child ka bond hai, which is very important. Usme we allow the child to do whatever they want to do, but then gradually we tell them this is what we want. So we use reinforcements for that. And it's sometimes very hard to identify a child's real reinforcer या reward. So किसी का वो कैंडी होता है, किसी का पेंसिल है, किसी का पेन है, किसी का लेस चिप्स हैं, किसी का whatever बंटी है, स्मार्टीज हैं, या बिकॉज मीठा we do avoid, chocolate we do avoid. Most of the times AST के साथ हाइपर एक्टिविटी बड़ी कॉमन होती है, so we try not to give them those stuff. But कोई कैंडी, it can be any string, it can be any toy, it can be candle. So वो reinforcer जो है ना, वो it gives them a lot of satisfaction pleasure and वो सब कुछ. So rapport building के साथ भी ये होता है कि बच्चे they develop a bond with therapists. So sometimes वो आते हैं, if they're not feeling well, they just want to, you know, hug their therapist a lot. वो एक idea हो जाता है because it's a bond. They cannot speak, but they can tell how emotionally they are connected with our therapist. Interestingly, Saturday, Sunday we're off, और उसमें पेरेंट्स फिर बताते हैं कि बच्चे अपने सुबह जाते हैं, कॉर्नर से बैग उठाते हैं, and they just want to go to the center, they want to come to us. So वो इतना क्यूट लगता है, कुछ उनमें से बोल सकते हैं, they take name of their friends, कि फरहान के पास जाना, खदीजा के पास जाना, और इस टाइप की बात, या फिर थेरेपिस्ट के नाम लेते हैं. सो ये इस टाइप की एक बॉन्डिंग है जो बच्चे they feel secure over this place because their needs are being fulfilled,
Although we are telling them, you know, therapy is not easy, we have our do's and don'ts. ये करना है, this is allowed, this is not allowed, this behavior is not allowed. उसके अंदर भी फिर वो ये कि बच्चे जो हैं वो they have this sense, they develop this sense because we are encouraging them constantly. Okay, yes, we are appreciating them, a lot of reinforcement, wow, good boy, good girl, या stars मिल रहे हैं, reinforcements हो रही हैं, फिर after every task, you know, whatever their reinforcer is, उनको मिल रहा होता है. So it's a very secure place in the sense that all they feel secure, all their needs are being met in a very nice, protective manner. ये हमारी कॉन्वर्सेशन का पहला हिस्सा था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू नो एवरी टाइम वी अपलोड।